the stupendous success, are you planning another film with your team, especially Ritesh? And have you signed any 3-film deal with him? Can you please get the contract? Why didn't you meet me before? You should have told me this before. Very honestly, we've been working together for 2 years. It's like we want to stay away from each other for 3 months. Just don't show me your face. We're tired of each other. Every day we are seeing each other. Okay. No. Don't take it seriously. Okay, I'm not taking it seriously. No, the point is, yes, in near future we will work together. I have a feeling. But I need to again have a correct script. See, Lai Bhari was made, a lot of hard work went into it and it was made. Even if next time I go him with a script or he says let's do a film, it will still require the same amount of hard work. It's not like एक बार हो गया तो दूसरी बार magic हो जाएगा. So we will have to really find a correct script for each other that I feel that Ritesh will be comfortable, Ritesh will be excited with the role, I will be comfortable with the script. And in fact, half an hour back also we discussed it that okay, let's start thinking about it, but right now it's too early to just commit just because we've pulled off a good film and it has been a commercial success. But let us very positively look towards it. Maybe 6 months, 1 year, 1.5 years, we don't know. But definitely we will come together very soon. Ritesh, 2014 seems to be on your side. You debuted as a villain, Ek Villain. You debuted in Lai Bhari. And then on a personal front also, you are being blessed. So what do you have to say about 2014? I think it's been great. It's been a great year. Every actor, you get a choice of scripts. You choose and you hope that the choices that you've made are the correct ones. And 2014 certainly for me has been on the better side. 2 tough choices was Ek Villain because I didn't know how people would accept me as a villain, as a negative guy. And that too, having such a strong image in a particular genre like comedy, where people say that आपको screen पे दिखते तो हंसी आती है, तो मैं सोचता था कि अभी इनको डराऊं कैसे मैं. पर I think thanks to Ekta Kapoor and Mohit Suri and the conviction that they thought I could pull this off. And I think 2 days ago the film crossed 100 crores and I guess somewhere we have pulled it off together. The second big challenge was Lai Bhari because it was the first Marathi film that I was going to do as an actor. The first time I was going to work with Nishi. And it was a new genre for Nishi also. It's an out-and-out commercial film. He is known for his brilliance in more realistic cinema. Always critic-friendly, 4-star reviews, National Award for his first film, Filmfare Award for his second film, third film critically reviewed and a commercial success. This was an out-and-out commercial film. I had never done something like this. Action genre was, and action drama was a genre that I've never done in my life. So yes, the fact that these 2 films have been received very well makes me believe that I can probably offer something more than a comedy, and hope that makers like Nishikant and Mohit Suri and other people do offer me something else other than comedy. I love comedies. I'll keep doing it, but yes, would love to do films like these 2. सलमान के लिए बिना मांगे कोई सीन होगा इस बार आगे अगर फिल्म करते हैं? सर अभी स्क्रिप्ट का ही पता नहीं है. अभी ये मुझे नहीं पता कि मेरे लिए कितने सीन है पिक्चर में, तो उनके लिए अभी मैं कैसे विचार करूं. Let's see, I don't know. Ritesh, we are talking about debuts. Very soon you will be making your debut with YRF with this film called Bangchor, where you have replaced Kapil Sharma. What do you have to say about it? What's your question? What do you have to say about what? Doing the debut? Doing a film with YRF, yeah. No, I think it's a great feeling to be working with them. That's one production house that I have not worked with. I have always looked up to that production house and seen their films throughout my childhood. Probably grown up watching their films,
And here I get a chance to work with them in Bangalore. I'm really excited. It's a great script, and I'm looking forward to working with them. So is it back to the comic genre again? With Back Bangchor? means where? With Bangchor. It's a different kind of humor. It's not a houseful. It's not Dhamal. It's different kind of humor. So yes, it's a funny film. Do you also plan to venture into Indian television in any way in the future? I did judge a show, I think a year and a half ago. So I have done my debut in for Star Plus, I think. Yeah. Thank you. तुम्हाला तर माईकचीच गरज नाही हो. ह्या चित्रपटात सिक्वल होऊ शकत नाही हो. कारण काय आता स्टोरी कुठे घेऊन जाण्याची. आता तिसरा भाऊ पैदा करावा लागेल त्याच्यासाठी. हा नाही लगेच एक फ्लॅशबॅक. अरे 2 जुळे नव्हते तिळे होते. ज्योती सर आमच्यावर स्क्रिप्टसाठी बसा तुम्ही. तुम्ही जर काही मार्ग काढला तर काहीतरी करू. अजून ह्याच्याबद्दल खरंच विचार नाही केला आम्ही. हा चित्रपट सध्या आमचं कॉन्सन्ट्रेशन फक्त मराठीमध्ये आहे आणि मराठीमध्ये जास्तीत जास्त महाराष्ट्रामध्ये लोकांनी पाहावं. आणि मुंबईत सुद्धा बरेचसे लोक जे मराठी भाषिक नाही आहेत ते सुद्धा जाऊन पाहत आहेत. याचा खरंच जास्त आनंद आहे. कारण की ट्विटर मला नेहमी म्हणतात की तुमचे सबटायटल्स आहेत म्हणून आम्हाला फायदा होतो आणि आम्हाला चित्रपट कळतोय. तर खरंच मला वाटतं की मराठी चित्रपट हे फक्त महाराष्ट्रापुरते मर्यादित न राहून त्यांनी दुसऱ्या प्रत्येक स्टेटमध्ये आणि दुसऱ्या लोकांपर्यंत पेनिट्रेट होऊन स्वतःची एक चांगली आयडेंटिटी क्रिएट करायला पाहिजे. काय वाटायला पाहिजे? तुमचं मनापासून उत्तर अपेक्षित आहे की अशा वेळी काय वाटतं, एक चित्रपट ज्याला खूप समीक्षकांनी स्तुती केली तो चालत नाही, एकाला तसं काही चांगलं लिहिलेलं नसतं. कसं आहे जेव्हा एखादा कमर्शियल चित्रपट असतो ना लय भारीसारखा, तेव्हा हे माहिती असते काही क्रिटिक्सना बहुतेक आवडणार नाही. परंतु बरेचसे क्रिटिक्स आहेत, तरण आदर्श आहेत, कोमल नाटा असतील, ज्यांना प्रचंड हा चित्रपट आवडला आणि त्यांनी प्रिव्ह्यूजमध्ये पण लिहिलेला आहे. पण चांगलं आहे ना, त्यात वाईट काय. तर मला वाटतं की जेव्हा आपण कमर्शियल चित्रपट लिहितो आणि करतो तेव्हा क्रिटिक्सचं मत आहे ते नक्कीच वाचून घेतलं पाहिजे काय त्यांचं म्हणणं आहे. पण शेवटी जो रिझल्ट असतो तो लोकांपर्यंत सोपवला पाहिजे. त्यांना जसं वाटतं तसं ठीक आहे. थँक्यू. आणि याच लोकांच्या रिझल्टला आपण सेलिब्रेट करतोय आज, त्यामुळे तोंड गोड करणं गरजेचं आहे. सो वी आर गोइंग टू कट अ केक नाव. कुड वी हॅव द केक?
थैंक यू। फर्स्ट टाइम आपने डेब्यू किया है एज डेब्यू फर्स्ट टाइम ही होता आई है। मीन सॉरी ओके। फॉर एन एक्शन फिल्म एंड बहुत मजेदार लगा है आप इन द मूवी, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, आई थिंक पहली बार मैं एक्शन कर रहा हूँ और निशिकांत के साथ कर रहा हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और जिस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं, आई थिंक ये फिल्म लोगों को पसंद आ रही है। मैं लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने जाकर ये फिल्म देखी और पसंद कर रहे हैं। आई थिंक एक एक्टर के लिए जब भी वो नई चीज़ करता है और जब लोग सराहते हैं, तो आई थिंक इट गिव्स मी इमेंस कॉन्फिडेंस टू डू मोर ऑफ सच थिंग्स एंड थैंक यू सो मच। रितेश, हमने देखा कि बॉलीवुड में आप बैक टू बैक कॉमेडी फिल्में कर रहे थे, तो अब इस फिल्म के बाद अगर एक्शन मूवी करने को मिलता है तो आप कॉमेडी और एक्शन दोनों में से किसको पसंद करेंगे? नहीं, आई थिंक मैं दोनों फिल्में कर लूँगा। साल में 2 फिल्में आती हैं, तो एक एक्शन कर लूँगा, एक कॉमेडी कर लूँगा। आपके जैसे 2014 बहुत लकी रहा है, तो ये सबसे बड़ा जो होगा ये टर्नओवर होगा या एक विलेन ज़्यादा अप्रिशिएट? नहीं, आई थिंक दोनों अपने अपने हिसाब से लोगों को पसंद आए। सो आई एम रियली ग्लैड एंड हैप्पी कि दोनों फिल्में चली हैं और चल रही हैं। सो एक एक्टर के लिए इससे अच्छी चीज़ और क्या हो सकती है कि एक ही साल में कॉमेडी फिल्म भी कर रहे हो, विलन भी कर रहे हो, एक्शन फिल्म भी कर रहे हो, एक्चुअली एक ही महीने में कर रहे हो। सो इट्स रियली एनकरेजिंग। आपने निशिकांत जी ने आपको सलमान और शाहरुख का मिक्सचर बुला दिया, तो व्हाट वुड यू लाइक टू से? उनका बड़प्पन है। आई थिंक इट विल बी क्रेजी ऑफ मी टू थिंक कि मैं सलमान और शाहरुख का मिक्सचर हूँ मराठी में। ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनका बड़प्पन है कि उन्होंने ऐसा कुछ सोचा। आपके फिल्म में क्या सलमान को लकी चार्म नहीं, आई थिंक वी आर वेरी लकी टू हैव हिम और ही इज एक्सट्रीमली ग्रेशियस टू हैव डन दिस फिल्म। सो वी आर रियली हैप्पी दैट ही इज पार्ट ऑफ दिस फिल्म। और अगर ये फिल्म चल रही है और अगर आप ऐसे सोचते हैं कि सलमान इज द लकी चार्म, व्हाई नॉट?